Hello students, today we will discuss about a new topic, force between two parallel current carrying wires. So according to the topic, we will consider two parallel wires. How? See, two parallel wires or two parallel conductor. Students, one thing, यहाँ पे length given नहीं है. अगर length given नहीं है, then we can earlier consider that the length of the wire is infinite. So wire of the length is infinite. How we can consider? We will draw dotted lines on the upside and downside to the wire. Now the length of the wire is infinite. Obviously we will consider first wire as A and second wire as B wire. Okay. Then current flows in the wire A is equals to may IA. Current flows in the wire B is equals to may IB. And perpendicular distance between these wires is equals to may small d. Clear? Then what we want to find? We want to find force experienced by the wire B. So force experienced by a conductor is equals to may I L B. We all know this formula. Okay? We all familiar with this formula. So now we have to find the value of I. We know about that is IB. Value of L. If we will consider this segment, then the value of length of this segment is equals to may capital L. The next thing is magnetic field. So first our aim is to find magnetic field on the wire B. So how we will find the magnetic field on the wire B? So for this we will use here Amperian circular law. For the Amperian circular law, first we will consider here Amperian path. So I am considering here Amperian path. This is the Amperian path as a circle having radius small d. Done? Then according to Amperian law, Ampere circular law. What is Ampere circular law? That is linear integral of magnetic field is equals to me product of mu naught and total current pass out from the Amperian path. Clear? This formula is clear for you? Then again, next, magnetic field around a current carrying wire is having the direction circular. Okay, circular direction में magnetic field क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. और अगर हम बात करें एम्पीरियन पाथ की, तो एम्पीरियन पाथ भी क्या है? सर्कुलर है. तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 0. तो इट मींस कि अगर मैं यहां पर इसे ओपन करूंगा तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगा? दैट इज b dl cos 0. देखो स्टूडेंट्स, मैं यहां से भी इसे एक्सप्लेन कर सकता हूं. अगर मैं इतने से पार्ट को dl कंसीडर कर रहा हूं तो dl पार्ट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है? सर्कुलर है. इट मींस दोनों के बिटवीन एंगल क्या है? 0 के इक्वल है. और अगर 0 के इक्वल है तो यहां पे मैंने पुट कर दिया cos 0. तो इसका वैल्यू बेटा किसके इक्वल हो गया? दैट इज म्यू नॉट टोटल करंट पास आउट इन द एम्पीरियन पाथ, दैट इज इक्वल्स टू में IA. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर IA. स्टूडेंट, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं? इस वायर B पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. बट ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वायर A प्रोड्यूस कर रही है. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर BA. Clear? Cos 0 is having the value 1 and BA is a constant quantity because at d distance value of BA is a constant quantity. That's why we put this value of BA outside to the integration. Then BA integration of DL is equals to mu naught IA. When we integrate the small part DL, then we find the total value of circumference, and total value of circumference, a circle having radius d is equals to 2 pi d. That's why the value is BA 2 pi d is equals to mu naught IA. So value of BA is equals to mu naught IA over 2 pi d. Now we are able to find the value of force experienced by the wire B. So force experienced by wire B is equals to
पुट कर रहा हूं FBA, बिकॉज एक्सपीरियंस कौन सा कर रहा है, कौन सी वायर कर रही है, B, और एक्सर्ट कौन कर रहा है, A. द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू में IB, क्योंकि इस वायर में कितना करंट फ्लो है, दैट इज IB, मल्टीप्लाई में कैपिटल L, क्योंकि हमने जिस सिग्मा मोमेंट को यहां पर कंसीडर किया है उसका लेंथ क्या है, कैपिटल L है, मल्टीप्लाई में वैल्यू ऑफ BA, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट हो रहा है कहां पे, इस सिग्मा मोमेंट पे, तो वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है जो A प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई BA. then value of FBA is equals to में IB L and value of BA is equals to में mu naught IA over में 2 pi B. Okay, then the force experienced by B wire per unit length is equals to में क्या आ गया, that is equals to में mu naught IA IB over में 2 pi D. If we find the same value for A wire, it means now B wire will produce the magnetic field and A wire experience force, then the value of that, it means force experience by wire A, that is equals to में F force experienced by wire A due to wire B is equals to me, if you solve out the whole thing for wire A also, then you got the same value. It means FAB by me capital L is equals to me mu naught IA IB over me 2 pi T. Clear? So students, per unit length पे जो force है वो wire A और wire B जो है वो सेम एक्सपीरियंस कर रही है, बट स्टूडेंट्स नाउ वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय बोथ वायर A and B. हाउ वी विल फाइंड दिस डायरेक्शन? फॉर दिस वी विल यूज अ राइट हैंड लॉ ऑफ द वेक्टर. ओके, सो व्हाट इज द लॉ? इफ यू आर हैविंग टू वेक्टर्स, vector A and vector B, both are having cross product, and the resultant of this vector is equals to me R vector, and you want to find the direction of R, that means direction of resultant vector. So what the phenomena you will use, that first of all you will use your right hand and align your right hand in the direction of first vector. Okay, turn your fingers in the direction of second vector. Okay, then the thumb will represent the direction of the force or the रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज द राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. सो हियर फॉर द वायर B, FB is equals to me I L cross BA vector. Clear? We are using a capital L. Okay, so for the value of FBA, okay, so when direction of FBA, we already find the value of FBA, but the direction of FBA is, first of all we will align our hand in the direction of L. So direction of L आप कहां लोगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, then direction of L we have already aligned our hand, our right hand. Okay, now we will turn our finger in the direction of second vector. Obviously जो आपने यहाँ पर A वायर के थ्रू एम्पीरियन लूप कंसीडर किया है, उस एम्पीरियन लूप के अकॉर्डिंग B वायर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड है. ऐसे आप वायर को होल्ड करोगे और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड होगा, दैट मींस क्रॉस. क्लियर? तो आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो आपके वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में अपने हैंड को अलाइन कर लिया, राइट हैंड को अलाइन कर लिया. सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन क्या कर लिया, अपनी फिंगर्स को टर्न कर लिया. Then the direction of thumb will represent the force, direction of force experienced by the wire B. It means the direction of FBA is like this, FBA vector. Clear? Same thing, if you find the direction of FAB is equals to the same thing, I A L cross B B. Clear?
Now we will discuss the same thing for the wire B. If we hold the wire B in which current is flowing upward, then the magnetic field on the wire A is outward. For the direction of magnetic field outward, we will put a dot sign here. Clear? Then the same scenario will be happen here like that. The direction of length will be considered upward because current is flowing in this wire upward. So L. Then for B, I cannot turn my fingers in the outward direction. So I am turning my hand. Now finger is turned towards the second vector. Now thumb will represent the direction of force. So direction of force experienced by wire A is like this. Force FAB. So both force are equal and opposite to each other. It means FBA is equals to minus FAB, and this is according to Amperian. This is according to Newton's third law. It means action reaction law. So this forces follows Newton's third law. Now the main thing about this whole topic is the international definition of 1 ampere current. How we can find the value of 1 ampere current? So see, we are having the formula that is FAB is equals to mu naught IA IB over 2 pi D multiply L. Clear? If we consider value of IA is equals to value of IB is equals to 1 ampere and value of capital L is equals to 1 meter, then what is the value? And value of D also equals to 1 meter. Then FAB is equals to mu naught over 2 pi. Clear? So from this all the values we will define the value of 1 ampere current. How? See, if the length between the wires consider unit and the segment of the wire also be considered unit, in that case if the force experienced by the wires is equals to mu naught over 2 pi, it means the current flows in that wire is equals to 1 ampere.